Hello students, welcome to our channel. Hope you have enjoyed the previous videos. Today we are going to discuss a poem Macavity, the Mystery Cat. आज का हमारा टॉपिक है Macavity, the Mystery Cat. आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. Summary of the poem goes like this. The poem is a description of a villainous character, Macavity, a criminal who is so skilled in committing crime that no one can ever find him. For whenever they reach the crime scene, he is not there. Macavity is called the mystery cat and the hidden paw because he is the great criminal. He has defied many laws and has baffled the Scotland Yard and Flying Squad. The poet believes that there is no one like Macavity, for there is no rule open could think of that he has not broken. He has managed to challenge even the laws of nature, as he can float in the air without any sport. One may look for him in the basement or in the sky, but one thing that is for sure is that he would never be found. Macavity is also called the ginger cat. He is very tall and thin. It is not very difficult to recognize him, as he has very sunken eyes. His eyebrows are deeply lined because of his constant plotting. He could also be recognized by sheer self-neglect. His coat is dusty and his whiskers are uncombed. He would move his head from side to side like a snake. And when you think he is sleeping, he is merely pretending. He is actually alert all time. There is just no one like Macavity. He is actually a devil inhabiting a cat's body. One may meet him here and there, but on the crime scene he would never be there. Dear students, ये कविता एक शातिर अपराधी के बारे में है जिसे कवि एक रहस्यमयी बिल्ला मैकेविटी कहकर पुकारता है. यह बिल्ला एक अपराधी किस्म का प्राणी है. उसे स्कॉटलैंड पुलिस और उड़न दस्ते के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर रखी है. वह अपराध करता है और भाग जाता है. जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां वह नहीं मिलता. उसने बहुत से मानवीय नियमों और गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ दिया है. उसके पास बहुत अलौकिक शक्तियां हैं. वह हवा में उड़ सकता है. वह बहुत चालाक है. वह लंबा और पतला है. उसकी आंखें धसी हुई हैं. उसका सिर एक गुंबद के समान है. उसका कोट धूल से सना रहता है. उसकी मूछें उलझी हुई होती हैं. वह अपने सिर को सांप की तरह इधर उधर हिलाता है. वह बिल्ली के भेष में एक शैतान है. वह नैतिक रूप से भ्रष्ट राक्षस है. हम उसे यहाँ वहाँ कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन जब भी अपराध या कोई घटना घटती है तो हम उसको कहीं भी पकड़ नहीं सकते. Let us discuss the poem stanza wise. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity एक रहस्यमय बिल्ला है. उसे छुपा हुआ पंजाबी कहा जा सकता है क्योंकि वह एक शातिर अपराधी है जो कानून का उल्लंघन करता है. वह स्कॉटलैंड पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ है और उड़न दस्ते के लिए एक निराशा, क्योंकि जब भी अपराध स्थल पर वो पहुंचते हैं तो मैकेविटी वहां पर नहीं मिलता है. मिस्ट्री रहस्यमय, मास्टर शातिर, क्रिमिनल अपराधी, डिफाई उल्लंघन करना, तोड़ना, बैफलमेंट पहेली और डिस्पेयर निराशा. दीज आर वर्ड्स. Macavity, there's no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity जैसा कोई नहीं है. उसने प्रत्येक कानून को भंग किया है. उसने ग्रेविटी के कानून नियम को भी भंग किया है. हवा में उड़ने की उसकी शक्ति एक फकीर को भी स्तब्ध कर देती है. और जब आप अपराध स्थल पर पहुंचते हो, अपराध की जगह पर पहुंचते हो, तो मैकेविटी वहां पर नहीं होता. आप उसे तहखाने में, बेसमेंट में ढूंढ सकते हैं. आप उसे हवा में भी देख सकते हैं. लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैकेविटी वहां पर आपको नहीं मिलेगा. स्टंजा नंबर 3. Macavity's ginger cat. He is very tall and thin, and you would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brows is deeply lined with thought. His head is highly doomed. His coat is dusty from neglect, and his whiskers are uncombed.
He sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. Macavity एक तर्क बिल्ला है, बहुत लंबा और पतला है। आप उसे देखोगे तो उसे पहचान जाओगे क्योंकि उसकी आंखें अंदर धंसी हुई हैं। उसकी आईब्रोज जो है विचारों की गहराई से रेखांकित रहती हैं। उसका सिर एक ऊंचे गुंबद के समान है। उसका कोट लापरवाही से धूल से सना हुआ होता है। उसकी मूछें उलझी हुई होती हैं। वो अपना सिर इधर उधर सांप की तरह हिलाता रहता है, और जब आप सोचते हो कि वो सोया हुआ है, अर्ध निद्रा में है, तो वह हमेशा जगा रहता है। इन दिस स्टैंजा यू कैन सी Macavity's अ जिंजर कैट। जिंजर वर्ड जो है यहाँ पर नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अ जिंजर कैट तर्क बिल्ला। जिंजर एक कलर भी होता है, लाइट ब्राउनिश कलर, एडजेक्टिव है। और टू मेक समथिंग मोर एक्टिव दैट इज वर्ब। तो इसको जिंजर वर्ड को यहाँ पर नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तीनों के रूप में प्रयोग किया गया है। स्टैंजा नंबर 4। Macavity, Macavity, there is no one like Macavity, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. Macavity जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वह बिल्ले की शक्ल में एक शैतान है, नैतिक रूप से भ्रष्ट है, एक राक्षस है। आप इसे किसी गली में मिल सकते हैं, चौराहे पर देख सकते हैं, लेकिन जब कभी अपराध होता है तो Macavity वहाँ पर नहीं होता। Dear students, there are some difficult words in the poem. Defy means to disobey, अवज्ञा करना, उल्लंघन करना। Bafflement, to confuse, किसी को confuse करना। Scotland Yard, headquarter in London. Flying squad is, you can understand, flying squad. Levitation, power of floating in the air without any support. Fiend, devil. Feline, a cat. And depravity is moral corruption. These are some words which are difficult. Rhyme scheme of the poem is stanza number 1. The rhyme scheme in stanza number 1 is A A B B. Number 2, the rhyme scheme of stanza 2 is A A B B B B. Stanza 3, rhyme scheme is A A B B C C. And stanza 4, rhyme scheme is A A B B. Some poetic or literary devices have been used in the poem Macavity, the Mystery Cat. Number 1, personification. Personification is giving human characteristics to animals or non-living things. Here in the poem, Macavity is personified as he does all the things like humans. Personification मानवीकरण करना होता है। मानव के गुणों के ऊपर ही हम लोग किसी अन्य जीव के ऊपर जो है दर्शाते हैं कि वो मानव की तरह कार्य कर सकता है, तो इसको personification कहते हैं। Anaphora, it is the repetition of a phrase in a poem. In the poem, various words and phrases are repeated to create poetic effect. Macavity, Macavity, Macavity is not there. तो यहाँ पर Macavity का प्रयोग 3 बार किया गया है, तो ये anaphora poetic device है। Third is alliteration. Alliteration is, it is the repetition of consonant sound in a line. Macavity, Macavity, M का बार बार repetition हो रहा है। Head is highly, that is also alliteration. Side to side, इसमें S जो consonant है इसका बार बार repetition हो रहा है, इसको alliteration बोलते हैं। Symbolism. The poet uses various symbols in the poem. His appearance symbolizes his villainous character. Footprints symbolize his name. Poet has used exaggeration in the poem. For example, he has the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. He is a fiend in feline shape, a monster of depravity. So these are some poetic devices used in the poem. Dear students, this is all about the poem, and I hope that you have enjoyed the learning with us. Thank you very much.